Bismillahirrahmanirrahim. Well, students, now we will be covering an activity from this chapter 9th, which was regarding dispersion of light. This activity says this activity is also related to refraction. ये जो है ना एक्टिविटी 9.1 जो आपके टेक्स्ट बुक में लिखी हुई है, ये रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट से ही मुंसलिक है. एंड व्हाट डू यू डू इन दिस वन? यू टेक अ शॉर्ट ओपेक प्लेट, एक छोटी प्लेट लें, जिस छोटी वाली जिसमें जो ओपेक हो, जिसमें से रोशनी ना गुजर सकती हो, एंड प्लेस अ कॉइन एट इट्स बॉटम. उस प्लेट के बॉटम पे ना, इसके पेंदे पे ना एक कॉइन रख दो, सिक्का रख दो, और अपनी पोजीशन उसे आहिस्ता आहिस्ता इस जगह पे ले आओ कि तुम्हें वो कॉइन जो है ना बेरली इनविजिबल हो जाए, मतलब आप उसको देख ना सकें. ऐसे नज़दीक रखा है, फिर पीछे होता हो ताकि आपको नज़र ना आए. इट वैनिशेस, यू नो. पोजीशन योरसेल्फ इन सच अ वे दैट द कॉइन इज जस्ट नॉट विजिबल, आपको विजिबल नहीं है. अपने अब दोस्त से कहें, अपने पार्टनर से कहें कि उस प्लेट में पानी डालें, एंड अनटिल यू सी द कॉइन. Now this is a typical phenomena of refraction of light. Take a plate, and the plate is such that it is opaque. Put a coin in the center. Position is अपने आप को आहिस्ता आहिस्ता ऐसी जगह position करें that the coin is not visible to you. Now tell your friend to put some water into it and keep pouring water into it. You will see that the coin will become visible because of the refraction. Reason? What is the reason for this thing? The reason is that when coin is not visible, rays entering your eye, when coin is not visible, rays are not entering your eyes. Rays are not entering your eyes then. When coin is not visible, rays are not entering your eye. When water is poured, refraction takes place, यानी कि phenomenon of refraction हो जाता है, light bends, रोशनी bend हो जाती है, and coin becomes visible because the rays of light are going like this, and you cannot see them because the rays are going straight. But when you pour water, the light bends, and when it bends, you can see the coin. This was activity 9.1. Now we talk about activity for the second topic, which is 9.2, and this concerns refraction in different mediums. This is the second lecture of this dispersion of light. Please remember this thing. Now 9.2 talks about refraction in different media. Very important point to notice: A, when light passes from air to glass or water, it bends towards normal. जब रोशनी की शुआ हवा से, जैसे ये हवा में है, वो ग्लास या वाटर में जाती है, this is air, this is glass या वाटर, इट बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल. टूवर्ड्स द नॉर्मल का मतलब क्या है? ये इसका रास्ता जाने का था, वो इधर नॉर्मल की तरफ होगी, 90 के ज़ाविया की तरफ. दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू नोट. व्हेन लाइट पासिस फ्रॉम एयर टू ग्लास और वाटर, इट बेंड्स टूवर्ड्स नॉर्मल. रोशनी की शुआ जब भी किसी लतीफ़ मीडियम में से, एयर में से, रेयर मीडियम में से टूवर्ड्स डेंसर मीडियम ग्लास की तरफ जाती है, इट बेंड्स टूवर्ड्स नॉर्मल. एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. जैसे आप देख रहे हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज द एंगल दैट द इंसिडेंट रेज मेक्स विद द नॉर्मल, एंड रिफ्रैक्शन इज द एंगल विच मेक्स विद द रिफ्रैक्टेड रे. सिंस इट बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल, सो एंगल ऑफ आई इज मोर देन एंगल ऑफ आर. You have to remember this thing. These are very important, properties of light. So you have to remember them. Okay, when light passes from glass to air, but when it goes from a denser medium, glass या water से हवा में जाती है, जैसे कि यहाँ पे ये अब जा रही है glass या water से, ये this is glass, this is water, this is air. When light passes from glass to air, it bends away from normal. तो ये normal से away, दूर हो जाती है. This is the path that you had to follow. It goes away from it. So angle of incidence is the angle which makes with the normal. Angle of refraction, which this refracted ray makes with the normal. So angle of refraction is more. Angle of incidence is less. Over here, the condition. What condition comes?
एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ग्रेटर देन एंगल ऑफ इंसिडेंस, और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ये है, ये ज़्यादा हो जाता है एंगल ऑफ इंसिडेंस से। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ग्रेटर देन एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये दो चीज़ें आपने ज़हन नशीन की प्रॉपर्टीज लिखनी है। रिफ्रैक्शन इन डिफरेंट मीडिया, यानी व्हेन लाइट गोज फ्रॉम एयर टू glass, or when light goes from glass to air, then what is the effect of on the angle of incidence and angle of refraction. Now we come to the laws of refraction. What are the laws of refraction? जिस तरह से laws of reflection पढ़े थे आपने, इसी the same way there are certain laws which this ray of light obeys. रोशनी जो है कुछ कवानीन को फॉलो करती है जब वो ये फिनोमेना ऑफ रिफ्रैक्शन होता है। Now what is the first law? The incident ray, the refracted ray and the normal at the point of incidence lie in the same plane. तीन इसमें मेन बातें आपने याद करनी। One, the incident ray, the refracted ray and the normal at the point of incidence, at the point of incidence lie in the same plane. ये जो है ना तीन चीज़ें, they all lie in the same plane. Again I say the incident ray, the refracted ray and the normal at the point of incidence lie in the same plane. A point of incidence क्या है? वो नुक्ता जहाँ पे रोशनी की शुआ किसी दूसरे मीडियम पर स्ट्राइक करती, टॉर्च मारी है जिस जगह पे वो स्ट्राइक करेगी शीशे के ऊपर, वो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है। एंड द सेकेंड इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू इट्स स्पीड इन अनदर मीडियम इज कांस्टेंट। यानी रोशनी की जो स्पीड ऑफ लाइट है खला में, अगर उसको डिवाइड करें टू द स्पीड ऑफ लाइट जो दूसरे मीडियम में, तो हमेशा वो एक मुस्तकिल एक कांस्टेंट आपको देती है। ओके, so this is the second law. You have to remember these two laws of refraction. First, the incident ray, the refracted ray and the normal at the point of incidence lie in the same plane. मतलब कि एक ही plane में वो वाक़या होती है। And number two, the ratio of speed of light in vacuum to the speed of light in another medium bears a constant ratio, is always constant. So this is the second one, and you can prove this these two laws also by activity 9.2. Take a glass slab, okay, and make a boundary of it after you have placed it on the white sheet of paper. एक सफ़ेद कागज़ लो, उसके ऊपर ग्लास स्लैब रखो और ये उसकी बाउंड्री लगा ड्रॉ कर लो। क्या है? देन ड्रॉ ए लाइन PO, एक ऐसी तिरछी सी लकीर ड्रॉ करो PO, and at point P put a pin over there and see the image that you see from this side and put a pin over here. Then put a second pin over here and see over there also. Okay, you will see whenever you are putting the second pin, you have to keep both the heads of the pins in the same straight line. So take a pin and place, see it from this side, place another pin and place it, take a pin again and Q and this place at the another one also, and you will see that they are all, after removing this glass slab, draw this line, draw this line and draw this line, you will see how the light has been refracted. This activity is there in your book. This activity is there in your book on page number 94. So again I'll come over there, go through this activity from your book, and this activity simply proves that the ray of light gets refracted. How do you do it? You take a glass slab, you place it on a piece of white sheet, draw the boundary, draw a line at an angle to this surface of the glass slab, put pins PQ, try to see them from this side, put a third pin and the fourth pin, and you will notice that you take two pins PQ, put them on here on the line PO, and then from this side you see and put another two pins over there, and in this way you can see after you remove the glass slab, join the points, and you will see that how it has been, the ray of light has been refracted. Now I will recapitulate again for your convenience. Activity 9.1, this says take a short opaque plate,
एंड प्लेस अ कॉइन एट इट्स बॉटम। एक प्लेट लो, उसके पेंदे में एक कॉइन रख दो और एंड पोजीशन सेल्फ इन सच वे, अपने आप को पीछे करते जाओ कि आपको वो प्लेट जो कॉइन है वो प्लेट में नज़र ना आए। जिस वक्त नज़र ना आए उस अपने पार्टनर से कहें कि इस कॉइन इस प्लेट के अंदर पानी डाले। जैसे पानी डालता चला जाएगा आपको कॉइन नज़र आ जाएगा। आपने अपनी पोजीशन चेंज नहीं करनी, उसी जगह पर खड़े खड़े। I will repeat what I wrote here. Take a short opaque plate, place a coin at the bottom. Position yourself in such a way that the coin is just not visible. Ask your partner to pour water into plate until you see the coin. इसका रीज़न क्या है? Refraction of light takes place when coin is not visible. Rays are not entering your eye. When water is poured, refraction takes place, light bends and coin becomes visible. Now this reflection of light, different media. This is topic 9.2. Please understand this. When light passes from air to glass, it bends towards normal. जब भी रोशनी जो है वो हवा से किसी वसीले में जाती है, किसी कसीफ वसीले में जाती है, तो towards normal bend होती है. Angle of incidence is greater than angle of refraction. और angle of incidence ज़्यादा होता है angle of refraction से. When light passes from glass to water to air, it bends away from normal. Angle of refraction is greater than angle of incidence. जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, this is air, this is glass, incident ray, it should have gone straight, it bends towards the normal. Angle of incidence is more than angle of refraction, and when it goes from glass to water, it moves away from the normal. Angle of incidence is I, angle of refraction is R, it's more. So in this case, angle of refraction is more than angle of incidence, or angle of refraction is greater than angle of incidence. Laws of reflection कौन से हैं? पहला law, the incident ray, the refracted ray and the normal at the point of incidence lie in the same plate. दूसरा, the ratio of speed of light in vacuum to the speed of light in another medium bears a constant. इसका मतलब है speed of light in vacuum को divide करो speed of light in some other medium, वह constant होगा. Activity 9.2 says, take a white sheet of paper, put a glass slab on it, make a boundary of it, draw a line PO at an angle, and once you have drawn, put two pins PQ over it. Try to see the heads of the pins from this side of the glass slab after placing it, and place another pin R and then the pin as such that all the pin heads are in the straight line. Remove the glass slab, join the points, and you will see how refraction takes place. Please make neat and clean diagrams and notes of it, and if you find any difficulty, please call me at 0333 5516358 and 033654733312. I have given you these numbers earlier also, and I'll write it down for you. 0333 5516358 and 0336 5473312. You can call me on these numbers if you have any difficulty, and I'll be very happy to know that you are giving me some input regarding this. Thank you very much.